Assalamu alaikum students. Here is your maths teacher Amir Haider. Today we are going to learn about how to multiply a two-digit number with a two-digit number. So today we are going to start our lecture number 17. In previous lecture we have also do multiplication with two-digit number and we have also do the division with a thousand with a number whose division with performed with 1000. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थाउजेंड्स वाले डिजिट के साथ डिवीजन करने को भी सीखा था, टू डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने को भी सीखा था. आज अगेन हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा वे डिफरेंट है. डिफरेंट वे इस किस तरह से इसका कि देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 11 इज रिटन ओवर हियर, राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई. So it means you have we have to write this question. This question is a vertical form. In a vertical form, then we have to multiply. So how we will do the multiplication in vertical form? यानी कि किस तरह से लिखना है हमें इसको. ये नंबर मिला हुआ है आपके पास 291,200 मल्टीप्लाई करना है इसको 39 के साथ. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये वर्टिकल फॉर्म होता है. ये जो लिखा हुआ है ये रिटन है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और ये वाला नंबर आपको वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है. तो ये होगा 9000 0, 9000 0, 9200 18, 1 carry on, 9100 1 plus 1 10, 9 plus 1 10 and 1 carry on, 9900 81 plus 1 82, 2 here and 8 carry on, and 9200 18 plus 8 will be 26. Then you have performed one time multiply. Then put here the symbol of multiplication, or it's up to you कि you may put symbol of zero. 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 twos are 6, 3 ones are 3, 3 nines are 27, 7 here and 2 carry on, and 2 threes are 6 plus 2 it will be 8. So now we have to add these all numbers 0, 0, 8, 6, 5, 7, 13, 1 carry on, 1 plus 2, 3, 3 plus 8, 11. So this is the answer. This is the answer. Again you have to solve same multiplication in horizontal way like this. इस तरह से आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई परफॉर्म करनी है. देखिए किस तरह से हो रही है. 109,256 you have to multiply it as a 76. Okay, 6 6 are 36, 3 carry on, 6 5s are 30 plus 3, 33, 3 carry on, 6 2s are 12 plus 3 15, 1 carry on, 6 9s are 54 plus 1 55, 5 carry on, 6 ones are 6 plus 5 it will be 11. Then you have to put a symbol of multiplication, or you may put the symbol of 0. यानी कि अब यहाँ पर क्या करनी है, आपने 7 की टेबल 6 पे लगानी है. Then you have to 7 multiply 5 and so on. So 7 6 are 42, 2 here, 4 carry on, 7 5 are 35 plus 4 it will be 39, 7 2s are 14, 14 plus 3 17, 1 carry on, 7 9s are 63 plus 1 64, 4 here and 6 carry on, 7 zeros are 0 plus 6 it will be 6, 7 ones are 7. You have performed multiplication, then you have to add these all numbers. Okay, 6 same, 3 plus 2 5, 5 plus 9 it will be 14, 1 carry on, 5 plus 1 6, 6 plus 7, 6 plus 7 it will be 13, 1 carry on, and 2 plus 4 it will be 6, 1 plus 6 it will be 7, and here the number comes 7. So this is again your answer of horizontal multiplication. So यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन परफॉर्म किए मल्टीप्लिकेशन के. आगे भी आपको 4 क्वेश्चन सेम मल्टीप्लिकेशन के मिले हुए हैं, तो वो चारों आपको होमवर्क में जाते हैं. यानी कि आप इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके वो चारों क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे. तो
तो आज हमने 2 क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के सीखे, बहुत आसान है, सिर्फ क्या करनी है आपको टेबल्स याद करनी है। यू हैव टू मेमोराइज द टेबल अप टू एट लीस्ट 20। आप 5 क्लास में हैं तो आपको 20 तक टेबल्स याद होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां पर आपने टेबल्स याद करनी है, उसके बाद टेबल्स लगानी है नंबर्स पर। सेम वे से जिस तरह से आपने 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन की है, 3 डिजिट की भी इसी तरह से होती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मल्टीप्लाई करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।